hold not successful. The cover should not come along. As this is Arjun Sirohi's do or die raid. 3 raids, and if you don't score any points, that is what it is. That is what it is. As I said, cover defense. It is the mistake of Deepak Redu once again from that left cover. बिल्कुल थोड़ा हाईलाइन डिफेंस यहाँ पर खेल रहा था और जिस तेजी के साथ वहाँ पर लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, इतना पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था दीपक रेदू के लिए। और बहुत सही वहाँ पर अंक यहाँ पर प्राप्त किया अर्जुन सिरोही ने। पहला रेड में पॉइंट लेकर आएंगे विजयनगर वीर्स के लिए और खाता यहाँ पर खुला है 3-1। सागर मलिक को वहाँ पर तीनों अंक मिले हैं। पर अब परवीन धनकर, नवीन आप इस खिलाड़ी की उपयोगिता किस तरह से देखते हैं? ये दर्शा रहे हैं, टच पॉइंट लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए। See, for me, Parveen Dhankar is always a substitution specialist. I mean to say, he is also a do-or-die raid specialist. Because what happens is, Amit Deshwal is a much more attacking raider than Parveen Dhankar. Look at that. This time he's got it. Running hand touch, stretches his hands across and gets it on Pawan Bhati. So no problem there. But I want to see Amit Deshwal being there in the starting 7 and use Parveen Dhankar as a do-or-die raid specialist. Right. Rahul Kaliramna goes in with the chain and sends out Arjun Sirohi this time. Proper chain tackle. और चलिए, पिछला मुकाबला इनके लिए नहीं रहा था, पर बता रहे हैं राहुल कलीरावना कि ये युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हैं और 123 अंक इनकी इस मुकाबले से पहले थे। अब 124 हो जाएंगे। ये एक अच्छा टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त करते हुए नजर आएंगे राहुल कलीरावना और परवीन की वहां पर जोड़ी थी। अब परवीन 3 के डिफेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, timely kick, that's what I call. But why did I say Parveen Dhankar is more of a do-or-die raid specialist on the bench? Is because you do not have lot of techniques as he raids, because he doesn't go for the bonus. He does not have a very good toe touch. Okay, and only things that he's got is the running hand touch, and on the previous occasion he got that kick going. So if you have limited sources for a raider, I mean to say limited skills, just play on the do-or-die raid strategy where you can come from the bench and save the team. As Alok Kumar comes in as a defender in a super tackle situation, Vijayanagar Weaves yet to find the tackle point, and this should be the right moment. Alok Kumar does not do it. Sagar Malik, easy as it gets. Kaziranga Rhinos. बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ और अंक यहाँ से विजयनगर वीर्स के विरुद्ध प्राप्त करेंगे काजीरंगा राइनोस। सागर मलिक थोड़ा सा और पीछे जा सकते थे वहां से आलोक कुमार, पर बिल्कुल वहां से नहीं जा पाया और उसी के चलते बहुत ही क्विकली यहाँ पर टच किया। विशाल चौधरी पर अब जिम्मेदारी है। अगर शुरुआती क्षणों में ऑल आउट हो जाएगी विजयनगर वीर्स तो पूरा मुकाबला उसके इर्द गिर्द खेलना होगा, उस लीड को बराबरी करने के लिए खेलना होगा। पर काजीरंगा राइनोस अभी तक अच्छा करा है, खासकर सागर मलिक की बेहतरीन प्रदर्शन। विशाल बोनस जरूर आपको दे देंगे। कवर पर शिकार बना सकते हैं नवीन, क्या कहीं जाकर दीप शर्मा को टो टच या फिर हैंड टच कर सकते हैं? Yeah, and also Deepak Redu not in the chain for me is a bit of a bother and bit of a worry. Look at that, Sachin Kab has been left alone and he goes in for that. Tries his no, he's got the bonus, but the dash. Tries his kick, but the dash was even successful by I think Deep Sharma. बिल्कुल, और अगर आप कॉर्नर में जाएंगे इतना ज्यादा अंदर तो बिल्कुल कवर और कॉर्नर दोनों आते चले जाएंगे। लेफ्ट फ्लैंक बहुत जल्दी के साथ आए, लेफ्ट कवर का अच्छा प्रदर्शन। सचिन खाब भी वहां पर मौजूद है, दीप शर्मा सही समय पर गए, दोनों ने मिलकर यहां पर एक आसान सा डैश कर दिया विशाल चौधरी को। तो नवीन अब शुरुआती क्षणों में ही यहां पर ऑल आउट हो चुका है विजयनगर वीर्स। पिछला मुकाबले में इनका डिफेंस शुरुआत से अच्छा कर रहा था, अब इनके डिफेंस के लिए शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है नवीन, तो कैसे वापसी के दरवाजे खोलेंगे अब ये? Now the Raiders have to get it in because the defense, if the defense is not doing well, it's the Raiders. So, right, once again Amit Nagar comes across from the left cover. That's the first tackle point for Vijayanagar Veers. The captain starts off well this time. Sagar Malik has to go back on the bench for the first time in this match. Combination of Pawan Bhati also. बिल्कुल, और ये अच्छा टैकल है। सागर मलिक को आप जितना बाहर रखेंगे उतना बेहतर होगा। कल भी हमने देखा अगर काजीरंगा हारा है तो सचिन खाब वहां पर नहीं मौजूद थे और सागर को ज्यादा अंक नहीं मिले थे। अब जरूर यहाँ पर सचिन मौजूद होंगे, बट अब एक अच्छी जोड़ी भी यहाँ पर नजर आई। इस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं, राहुल कलीरावना का शिकार नहीं बनना है। कृष्ण मवाई युवा खिलाड़ी है, जी जान से खेलेगा इस मैच में। Yeah, that is what I was mentioning. Against Rahul Kaliravna, Krishan Mawai will be tested. He's got a very, very strong ankle hold. Now, against Parveen Dhankar, you have to understand, right corner should be really careful, but he turns across. He says, Amit Nagar, I've got a toe touch on you. Amit Nagar says, no, you haven't got it. Decision did not come in.
Decision did not come in. And Parveen Dhankar wants a review now. So it's the Kaziranga Rhinos' review. Oh, even क्या बहुत दूर था नवीन, या फिर टच किया है? यहाँ पर देखना होगा क्या हल्का सा टच हुआ है या फिर नहीं, क्या लगता है नवीन आपको? Oh, very close toe touch that he is claiming on is Parveen Dhankar. No, I'll tell you what, it is in favor of Amit Nagar because Parveen Dhankar is not a tall raider, so he cannot stretch it so far. Yeah, no points. Yeah, Kaziranga Rhinos want a review. As I said, no points will be given. Now I think they will lose the review as well here, Arshit. बिल्कुल हो सकता है। आइए पहले सुनते हैं कि क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से काजीरंगा। आइए वापस जाइए। टीवी अंपायर काजीरंगा राइनोज की मांग है 1 टच पॉइंट। हमारा निर्णय था नो टच पॉइंट। कृपया रिव्यू दीजिए। See, Parveen Dhankar, this is what I said. He's got limited skills as a raider. His running hand touches are good. But look at this. This toe touch is never in his favor because the covers, especially the left cover, when he's not in that high line attack of coming outside the balk line, he suffers. And Parveen Dhankar, as we see, he always plays on that balk line, does not get inside. As expected, review will be lost. Amit Nagar will stand his ground. Parveen Dhankar will feel bad about it. They have lost the review in the first half. So 12.5 minutes in the first half. It's going to be Vijayanagar Veers holding the court. As another defender has been taken out. Deepak Redu goes out there. और रविंदर बेनीवाल को अंदर बुलाया गया है नवीन, जिन्होंने कल रेड में भी यहाँ पर साथ दिया था और अब यहाँ पर लेफ्ट कवर खेलते हुए नजर आएंगे। और कोच ने कहा था कि इंजरी के बाद यहाँ पर दीपक रेदू आज खेलते हुए नजर आएंगे, पर बहुत ही जल्द उन्हें एक बार पुनः बाहर बुलाया है लेफ्ट कवर पर। अब रविंदर बेनीवाल सही समय पर अर्जुन सिरोही ने देखा कि योगेश दहिया आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही टीमों के सभी रेडर्स पूरी तरह से तैयारी के साथ आए और नीचे योगेश दहिया का शानदार एंकल होल्ड। 1 पॉइंट। I think Yogesh Daya has practiced that ankle hold in the last couple of days. He was not so sure with these ankle holds in the summit round or even in that booster round that we saw. His back holds were very strong, but now he's added another weapon. So you'll have to be really careful, Arjun Sirohi, the next time you go in. But look at this, Parveen Dhankar, as I said, he will only play on the balk line. And very importantly, Ravi Bhati should understand that he has to go back very quickly. The only weapon Parveen Dhankar will have is the running hand touch on the right corner. And see, he goes back empty-handed. So this is why I always keep saying that, Amit Deshwal is properly a better raider. Of course, Parveen Dhankar is very talented, skillful, intelligent, all that given. But he's got limited sources. And Amit Deshwal can go in deep to get that touch points even better. As another bonus point was stolen. Sagar Malik comes into your door right now. अब डू और डायरेक्ट में यहाँ पर कठिन प्रश्न क्या पूछ पाएगा विजयनगर वीर का डिफेंस। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा संभल कर खेलना होगा, कवर से आप गलतियां नहीं चाहेंगे। और अमित नागर ने यहाँ पर गलती की है, अमित नागर ने यहाँ पर गलती की है, थोड़ा सा एडवांस टैकल के लिए चले गए थे और एक बहुत अच्छी जंप नजर आएगी, एक बहुत अच्छी और क्रूशियल जंप यहाँ से नवीन। Once again the costly butter proving himself wrong. Yeah, see how far away he is from the balk line. Amit Nagar, the skipper, always in contention for any advanced failed tackles like Sanjay Dhul of Murtal Magnets. See, both the players, I feel so wanted on that defense line, and then if you don't get it, it goes so wrong. As once again, Vishal Chaudhary gets the right cover on his running hand touch. Deep Sharma has to go back. देखिए बहुत हाईलाइन यहाँ पर मौजूद थे और ये विशाल का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्रम रहता है कि कवर्स को अच्छी तरह से शिकार बनाते हैं। सागर मलिक आज अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक बार भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं जकड़ कर पकड़ पाया। और लीजिए कृष्ण नागर यहाँ पर एक बार फिर से गलती देखी नवीन, कृष्ण और मिड लाइन में बहुत ही महीन सा गैप था और बड़ी आसानी के साथ कृष्ण अपना पॉइंट यहाँ पर गवा देंगे। See, I'll tell you what, if the defender goes out like in this fashion, he looks even more vulnerable than going in for an attack. See, two things. One, the defender tries to put in that advanced tackle and then fails. See, that is one big error. And the second error is when you do not retrieve back in time. But Deep Sharma on that previous occasion where Vishal Chaudhary was raiding, he was going back, but it is Vishal Chaudhary's brilliant skills of stretching that hand and going for the hand touch. So there you cannot do anything as a defender. It is the raider skill that you will have to agree and say, okay, Shabash, you did well. But I do not understand why the defense don't go back in sometimes
and then goes for the advanced tackles. So those are the two big errors that defenders have to really iron out in their skills. Most importantly, those advanced tackles. Even though going back can be a little more tricky sometimes, but those advanced tackles will always get them out than be in that points contention. एग्जैक्टली नवीन, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिफेंडर के लिए कि आप एडवांस टैकल जितना कम करें, और खासकर ऐसे बड़े मुकाबलों में जहां पर डू और डाई मुकाबला है, एलिमिनेटर ये मुकाबला है, जो यहां से टीम हारेगी एलिमिनेट हो जाएगा, उनका सफर समाप्त हो जाएगा। युवा कबड्डी सीरीज के मॉनसून एडिशन में विशाल थोड़ा सा तेज होना चाहते हैं, और क्या ये लीजिए राहुल कलीरावना का ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर टूट कर पड़ा है डिफेंस, दीप शर्मा का ही सही समय पर सपोर्ट। विशाल लग रहा था कि एक बार मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, पर नहीं। यहाँ पर After the kick, look at that. After the kick, goes in for the straight ankle hold. The leg which came in with the kick should have been in for the reverse ankle hold. No, Rahul Kaliravana went in onto that leg which the weight was on. Oh, what a thinking. What a thinking by Rahul Kaliravana on that left corner. Whenever the Raiders' weight is on one leg, you go for that. Generally, we say that it's a reverse ankle hold when the kick was substituted, but somewhere Vishal Chaudhary went in for a wrong kick, wrong-footed kick. He kicked in from the left leg, and Rahul Kaliravana went for the right leg. Wow, split-second decision, really well done. As Arjun Sirohi will try to get some points, but goes out empty-handed. बिल्कुल, अब 4 के डिफेंस में यहाँ पर विजयनगर वीर्स और शुरुआती क्षणों में बहुत अच्छी लीड यहाँ पर बना ली है। अभी भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर विजयनगर वीर्स से अब आपको देखना वो क्या मिलेगा देखना है, बट रवि भाटी के पास मौका हो सकता है। परवीन धनकर को यहाँ पर आउट करने का विजयनगर के पास मौका है। डू और डाई रेड है, कोई भी एडवांस टैकल की गलतियां नहीं करना चाहेंगे, और नहीं किया इस बार। पवन भाटी पर किक लगाने का प्रयास किया था, सही समय पर सही टाइमिंग के साथ पवन यहाँ पर दोनों लेग्स पर गए, और अच्छा साथ वहां पर रवि भाटी का मिलेगा। इस बार परवीन धनकर का शिकार बना लेंगे। और नवीन, आप परवीन के बारे में बिल्कुल सही कहते हैं कि उनके पास जो सबसे मेन स्किल है वो उनकी स्ट्रेच करने के बाद हैंड टच होता है, बट इस बार अच्छा शिकार बनाया विजयनगर वीर्स के डिफेंस ने उनका। Arjun Sirohi comes in along with a packed house. Somewhere Vijayanagar Veers need to really understand and say, we are slowly but surely coming back into this game, and the comeback can happen by the Raiders only. So the defense can get just 1 point. Just kicks in the air, does not get it. Yogesh Daya with a pursuit. The kick was gone, and Yogesh Daya also gets a point. Arjun Sirohi was there on the hand touch, and Pavan Bhati also came in with the dash. Does not get succeeded. 2 points there for Yogesh Daya. और ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर, ये देखिए पूरी तरह से मिड लाइन की तरफ जा रहे थे योगेश दहिया, तो पवन भाटी से यहाँ पर जरूर गलती हुई है। अर्जुन सिरोही को तो जरूर वहाँ पर योगेश दहिया ने जाकर सबसे पहले परसूट करने का प्रयास किया था। कृष्ण मवाई आ रहे हैं डू और डाई रेड में। अब डू और डाई रेड में यहाँ पर पॉइंट लाना होगा, बोनस चुराना चाहते हैं। सचिन और राहुल के नीचे से बोनस क्या चुराया है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विजयनगर वीर्स। They can go in for the review. They can go in for the review. Yes, they can, because it's a do or die raid, and Kaziranga Rhinos have not got the review. Remember, they lost it. Yes, they wanted the review, but they do not have the review there. Oh, super tackle on Sagar Malik. After this raid, we'll see if Krishan Mawai Pro somewhere got the bonus out. Super tackle attempted, and really well done by not getting the anti-cross done. Oh, that's a good skill shown in there by Ravi Bhati. एग्जैक्टली नवीन, बहुत ही अच्छी स्किल्स यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से। सबसे पहले अमित नागर वहां पर गए, बट ये सबसे पहले हाथ को भी रोका और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर फोर्स लगाया, और उसके पश्चात आने नहीं दिया सागर मलिक को। ये सुपर टैकल यहाँ पर क्या विजयनगर वीर्स की वापसी का पिंगल बजा सकते हैं, बट रेडर्स को पॉइंट लाना बहुत जरूरी है। आज विजयनगर वीर्स के रेडर उस तरह से कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। Yeah, in that 2 window, if we can just get to see if Krishan Mawai got the bonus on that do or die raid, it'd be really interesting. I know that moment has passed, but Kaziranga Rhinos should realize that losing a review can be so damaging. Because it was a do or die raid, he just went in with the bonus. The referees also agreed with Krishan Mawai, but the Kaziranga Rhinos defense, especially Rahul Kaliravana, was not convinced. He wanted that review. Yeah, there we go. All right. Looks lucky. Looks really lucky. Would have been interesting if the review was been there for Kaziranga Rhinos. See, match turning, decisive decisions
If Krishan Mavi would have been gone in that raid, there would have been only 2 defenders, and Sagar Malik would have got an even better chance for the all-out to be inflicted. Once again, Deep Sharma comes across from the right cover, blocks Krishan Mawai. Out you go, says. This time he's tackled out. बिल्कुल लगातार यहाँ पर बोनस का प्रयास करते जा रहे थे कृष्ण मवाई। इस बार दीप शर्मा ने यहाँ पर अच्छी प्लानिंग के साथ आए और उसके पश्चात राहुल कलीरावना ने बड़ा आसान सा यहाँ पर साथ दिया और यहाँ पर शिकार बनाया। फिर से सुपर टैकल का मौका है परवीन धनकर। पिछली बार सागर मलिक को शिकार बनाया था विजयनगर वीर्स के डिफेंस ने। अब ये प्रॉपर 2 कॉर्नर होंगे। कृष्ण नागर के पास दमकम है। रवि भाटी भी यहाँ पर अंक लाने में सामर्थ्य रखते हैं। बहुत ज्यादा अंदर क्या पॉइंट ले लिया है परवीन धनकर। सही समय पर टर्न किया जी नहीं, सेल्फ आउट हो जाएंगे। सुपर टैकल मिल जाएगा विजयनगर को नवीन। विजयनगर वीर। Yeah, see, as I keep saying this, sometimes I always say that if the players prove me wrong, I'm the happiest person on earth. Does not prove me wrong once again. Goes in for the running hand touch. Only Parveen Dhankar. That's the strongest skill. Does not control himself and steps inside the lobby. 2 points easily given away. Now, unleash the main missile, Yogesh Nagar Saab. Put your main man on the court. And this is going to be Varun Bhati coming inside in place of Vishal Chaudhary. And let's listen to Yogesh Nagar, what he has to say. थोड़ा सा जीत आए दिखा लो, 4 पॉइंट की लीड है। इससे बोलना है भाई कौन तो मत मारना, एंकल में बैठेगा बैठे, कवर देख ले, कॉर्नर देख ले, कौन चल ले, भाग के आगे मार ले, चैन में मत फंस जाना उधर, ठीक है? कभी चैन में फंस जा। हाँ बेटर, बिल्कुल सुन, झूठा भी मत करे, दूसरे उठा लेगा भाई, वो सेकंड पे मार ले, ठीक है बेटे? आराम से जीत आई, इधर इधर बेटे, ठीक है? कुछ भी नहीं है बेटे। Nice bit of really comforting talks as always by Yogesh Nagar. He just says be wary of the corners. Ankle hold will come in very strong. So just remember, when you go to raid, do not go near the corners keeping your legs. Just go with the hands. Let's see if Varun Bhati can do it. He will be going against, of course, Rahul Kaliramana, because he's a right raider. See Varun Bhati's skills. He does not go in from the right corner. He just starts off from the center, not going towards Rahul Kaliramana. Good thinking, but he also has to understand Yogesh Nagar is there. Just for the ankle holds and double thigh hold by Yogesh Dhaya. बिल्कुल, और बहुत यहाँ पर प्लानलेस नजर आए वहां पर। बिल्कुल यहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा पॉज उन्होंने ले लिया था, जिसके चलते एक आसान सा पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा। योगेश दहिया को एक बहुत अच्छा टैकल यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जरूर आप देखना चाहेंगे बेहतर क्या लगातार तीसरी बार एक मौका बन पाएगा सुपर टैकल का। इस बार सागर मलिक है जो ऑलरेडी अपनी टीम के लिए 6 से 7 अंक रेड में यहाँ पर प्राप्त कर चले हैं। काजीरंगा राइनोस 5 अंक से यहाँ पर बढ़त पर है, पर विजयनगर वीर्स लगातार ऑल आउट की दहलीज पर है। अगर यहाँ से पॉइंट रेड में नहीं मिलते हैं तो डिफेंस कब तक यहाँ पर लगातार साथ देगा, ये देखना होगा। काजीरंगा राइनोस का डिफेंस आज अच्छा कर रहा है। योगेश दहिया और राहुल कलीरावना की जोड़ी फिर से अच्छा कर रही है। अमित नागर सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी रेड करते हुए नजर आएंगे। That was a very smart raid by Sagar Malik on the previous occasion, because he knows that couple of times Vijayanagar Veers have come back with a super tackle on, and they did not want to give away 2 more points as Kaziranga Rhinos have taken this time out. Sunil Yadav. सेकंड है ना, हाँ अपना लीड राई ना लीड सुन जैसे तू खड़े है ना, अगर ज्यादा दूर है ना किक मारे कर, स्लिप मत मारिए, किक मार दे नंबर आ जाएगा, एक गोड़े तोड़ दो। हाँ बस ठीक है भाई, भीतर आने दो। Oh, they just want one raider to be tackled out. वो भी भीतर आओ, जब बाहर ना ट्राई कर दिए, ठीक है दीप। Yeah, very well said. Whoever said that point, it's a nice point. They just want that one raider to be gone, and that one raider is Vishal Chaudhary. Probably he will be coming in as a substitute when the time comes in. But Sagar Malik has to, however, try in this raid. If not, the next raid will be a pressurous one, because the next raid will be a do-or-die raid. He goes against Ravi Bhati, gets the kick on, and 2 more points. Beautifully done. That's the first time Sagar Malik is successful in a super tackle situation. Jersey number 44 and 3 out. बिल्कुल, बहुत अच्छी यहाँ पर किक लगी और कहा भी था वहाँ पर कोच साहब ने कि तुम प्रयास करना वहाँ पर किक लगाने का। किक बहुत अच्छा लगाया, उसके बाद एंकल्स पर यहाँ पर गिरने का प्रयास किया। एक अच्छा साथ देना जरूर चाहते थे वहां से कृष्ण नागर, पर तब तक वहां से राइट हैंड मिड लाइन के बाहर चल चुका था। एक अच्छी यहाँ पर स्लाइड लगाई और उसके पश्चात एक बहुत अच्छी किक। Correct, but what is this? Am I able to believe my eyes? Amit Nagar has come into raid when Vishal Chaudhary can be substituted in. It's a last man standing, but
Amit Nagar always throws this little surprises. How many times he's made sure that he saves the team out. Bonus +1. Yogesh Daya commits the error. बिल्कुल, और अमित नागर शायद लकी चार्म अपनी टीम के अक्सर साबित होते हैं जब वो अंतिम तौर पर जाते हैं। हमने पहले भी देखा है नवीन यहाँ पर। अब अर्जुन सिरोही यहाँ पर एक और डिफेंडर होंगे। अमित नागर क्या एक बार फिर से अपनी टीम को यहाँ से ऑल आउट से बचा सकते हैं? पहले रेड में और अब क्या डिफेंस में नवीन? नहीं। Oh, Sagar Malik actually gave a very good intention that he is going for the raid, but suddenly he attacks Amit Nagar, and Amit Nagar did not see that coming. It was a surprise attack. Look at that. Amit Nagar did not expect Sagar Malik will come charging towards him. He was ready for the cover, actually, because Arjun Sirohi was the only raider there. Good planning by Sagar Malik. Once again, can Arjun Sirohi save Vijayanagar Veers? Last raid of the first half, Harshit, and if this all-out goes in favor of the Kaziranga Rhinos, remember, the toss was won by the Vijayanagar Veers. I will say Arjun Sirohi to come back. He has to come back. It's okay if it's an empty raid. The second half, you will be raiding first. Come on, Rahul Kaliravna. What a proper hold that was. You could have come back. Your first raid in the second half would have been in your control. You could have taken that when the momentum is broken. Oh, Arjun Sirohi, think about those things, because Kaziranga Rhinos started the raid. Sagar Malik was the first one to start the raid. Because Amit Nagar had won the toss, you would have raided in the second half, brother. Come on, how many times do we have to keep on reminding our players, Jose, Jazba and Junoon, but Jahan in capital letters, Harshit. एग्जैक्टली नवीन, ये बहुत बड़ी ट्रिक यहाँ से मिस हुई है, बट अब यहाँ पर फिर से दर्शा रही काजीरंगा राइनोस की टीम। यहाँ पर 13-7 यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं रेड और डिफेंस में और टैकल में। अगर हम बात करें 5 पॉइंट विजयनगर वीर्स के पास भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस एलिमिनेटर में हम बहुत ही जल्द वापसी करेंगे। और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एलिमिनेटर नंबर 2, यानी कि यहाँ पर आप जानेंगे पहचानेंगे कि कौन सी एक और टीम बनेगी जो यहीं पर साथ समाप्त करते हुए नजर आएगी युवा कबड्डी सीरीज के साथ। अमित नागर ने यहाँ पर शुरुआत की थी गलतियों की, पर उसके पश्चात अच्छा किया है। पर आज काजीरंगा राइनोस का डिफेंस एक बार फिर से सर चढ़कर खेला है। सागर मलिक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मिला जुला सा मुकाबला रहा है ये सागर मलिक के लिए। अब देखना होगा क्या विजयनगर वीर्स का डिफेंस और उनके खासकर रेडर्स पॉइंट्स ला पाएंगे मेरे साथ सेकंड हाफ में। एक बार पुनः जुड़ेंगे नवीन, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Harshit. The 2 all-outs in the first half, somewhere Vijayanagar Veers have been pushed to the wall, but this tackle from Rahul Kaliravna could have been avoided, because the first raid, see what is happening. Vijayanagar Veers are raiding. Come on, guys. This is what I said. You could have broken the momentum. In the first raid of the second half, it will be a different mindset. It will be a different game. And even if Arjun Sirohi would have been coming in for the raid, he would have had at least 60% of chances. I'm not saying he would have succeeded. I'm saying he would have had 60% of chances to get a touch point and save the team and escape from that all-out. Big trick gone missing. But Sagar Malik has the control now, as Kaziranga Rhinos are slowly but surely inching away 8-point lead because of the 2 all-outs. And Varun Bhati, nice to see that he is there on the mat, starting off instead of Vishal Chaudhary.
बट नवीन मैं विशाल को भी देखना चाहता हूँ। कृष्ण मवाई की जगह Yeah. यहाँ पर आप बुला सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसे इम्पैक्टफुल रेडर हैं और खासकर पिछला मुकाबला भी जब विजयनगर वीर जीता था तो उन्होंने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया था। इस बार सुनील यादव साहब को जरूर ग्रीन कार्ड दर्शाया गया है कि आप बाहर से बैठकर ज्यादा डायरेक्शन दे नहीं सकते हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को। Yeah, much needed warning as well. But I completely agree with you. What he's saying is instead of anywhere, Vishal Chaudhary being inside the playing 7, that is really impactful. Because see, it's all about momentum. You just say 8-point lead. I just use the word just. Because of this, once again a kick and the ankle hold is proper. Right cover comes across and Rahul Kalkarna once again shows why he is so dangerous for any right raider. और नवीन वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर वरुण भाटी में भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है इस बार, बहुत ही पावरफुल। और राहुल कली रावना का आप प्रदर्शन देखिए, ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। पिछला मुकाबला बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, एक भी अंक उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। सुनील यादव साहब ने इन्हें बाहर बुलाया था, बट ये अब जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं वक्त है आजमा ले, जितना आजमाना है, एक दौर क्या हराएगा उसे जिससे हराया जमाना है। यानी कि इस पूरे खिलाड़ी ने पूरे वाईकेएस में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखलाया है और ये खिलाड़ी असल मायनों में बेस्ट डिफेंडर का यहाँ पर तमका चाहता है। पर चलिए कौन वापसी कर रहे हैं नवीन, जिनकी हम बात कर रहे थे, विशाल चौधरी वापसी कर रहे हैं अब। But do you think somewhere Rahul Kaliravna has got a big impact on the right raiders of Vijayanagar Veer? See, that is the problem. Even with Varun Bhati and Vishal Chaudhary coming in, Rahul Kaliravna has got a big impact and that is why the running hand touch is so useful. He gets the point, Vishal Chaudhary, this time on Yogesh Daya. And I want Arjun Sirohi to start this off because Arjun Sirohi is a left raider and you will also put Yogesh Daya under a lot of pressure. Of course, he's also a good raider, but comparatively to Rahul Kaliravna, somewhere you can get in more points against Yogesh Daya. बिल्कुल सही कहा नवीन आपने कि अर्जुन सिरोही से आप लगातार रेड्स करते हुए देख सकते हैं, या फिर आप विशाल चौधरी से जाते हैं कि वो ज्यादा आगे न जाए, वो बॉक लाइन के आसपास के लिए, जहां पर मनदीप ने वो काम किया था। क्या सागर मलिक एक बार लग रहा था एम्प्टी रेड कर जा रहे हैं, पर उसके पश्चात गए और शायद अपनी टीम के लिए यहाँ पर क्या अंक लेकर आए हैं, देखना होगा। अरे विशाल चौधरी, why were you going in for the ankle hold from the right in position? What was the necessity? Look at that. Bonus was not attempted. And I think on that right corner, it was Ravi Bhati who went in for the ankle hold first. But why did Vishal Chaudhary go in? वो शायद परसूट के लिए What was, okay, I think Vishal Chaudhary was going for the pursuit. Okay, right. He was just going for the pursuit. And Ravi Bhati is in question now for the ankle hold or on the touch. Ravi Bhati, go back. If you know that you've committed the error, go back and save us the time. पर शायद नवीन क्या एक बार फिर से अगर हम उसे देखें तो क्या वो हाथों के बीच में से उनका एंकल निकल गया था? रेफरी के निर्णय पर यहाँ पर लगातार संशय बना रहेगा। एक बार फिर से हम उसे देखना चाहेंगे पुणे की कहाँ वो हाथ लगा था या फिर प्रॉपर एक पॉइंट मिल जाएगा। चलिए 100%. Okay, referee साहब, if you switch off the mic, you need to remember to switch it on, or else in the commentary box you will be given a green card by Harshit. Yeah, there we go. See, when Sagar Malik actually realized it, he realized it immediately that there was a hand that came in, and Ravi Bhati should have just been more, what do you say, gentleman's game, kabaddi, being for more fair. He should have just agreed to it. Rahul Kaliravna attempts the ankle hold. Support does not even come. Why does he need a support? Why does he need that support even? Oh! नवीन व्हाट अ इंपैक्टफुल प्लेयर ही इज। देखिए सोलो टैकल यहाँ पर, और देखिए विशाल चौधरी जैसे बड़े रेडर को भी यहाँ पर इकलौते तौर पर इन्होंने शिकार बनाया, और उसके बाद यहाँ पर कह रहे थे अपने डिफेंडर्स को, भाई साथ कब दोगे? साथ इस बार मिला और लीजिए। एक और यहाँ पर टैकल पॉइंट मिला है काजीरंगा राइनोस को, और ये है युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर राहुल कली रावना। रूथलेस राहुल कली रावना कहना चाहेंगे आप नवीन ने? Yeah, good word, definitely. And he's sort of a triple R for me, RRR, because he's ruthless, he's Rahul, and against the right raiders, he is definitely rude. So, is the triple R. Superb ankle hold. But I'll tell you something, where does this skill comes into play is because I've heard players, especially Surinder Nada, explain it to me out very personally. He always used to talk to me that as there is a double ankle hold, Parveen Dhankar, no skills whatsoever. So just come back to that story of Surinder Nada.
where you know what he used to tell me? The real impact on that ankle hold is these players, especially the corner defenders, practice with oil on the legs of their teammates. The oil has been applied on the legs of the Raiders, and then he goes in to go for the ankle holds. And why I say Surendra Nada is because Rahul Kaliravna is a student of Surendra Nada. Look at that! Look at that! He's making his master proud once again. Surendra Nada will be really happy with this. Comes in from the same village as Surendra Nada is Rahul Kaliravna. Another ankle hold. So practicing with the oil, and in the match when there is no oil, it gets even more stronger, isn't it? बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर। और देखिए नवीन, ये इनका छठा टैकल पॉइंट है, और पिछली दफे जब काजीरंगा के विरुद्ध थे, ओहो ये है एस्केप रूट। लीजिए, अब शायद ये मुकाबला यहाँ से समाप्ति की तरफ जा रहा है, और सागर मलिक की ये रेड ने क्या एक तरीके से घोषणा कर दी है। ये है मुस्कुराहट। लीजिए नवीन, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? Unexpected and totally unbelievable. Amit Nagar, can you give such a big opportunity? It is just not a small window, it's a tunnel. And inside that tunnel is the Vijayanagar Veers defenders who've got stuck. And outside the tunnel comes out Sagar Malik. He's wiped out. He's wiped out the entire team. It's going to be a super raid. Definitely a 4-point raid now. Amit Nagar, when he goes in, why did the chain go behind him? Where is the second line of defense? And this is catch me if you can. They could not. They are stuck in the tunnel. What a way to get that 4 points. Arjun Sirohi and Yogesh Daya Saab now will have to think about something else. They have to think about something else. What's happening? I think they're sending them back. Is it 1 or 2 points? Or 3 points? Yeah. Super raid. And the referee Saab. Yeah, please switch on the mic. Yeah, thank you. There we go. Hand touch on the right hand defender. Arjun Sirohi goes in. Amit Nagar identically becomes safe. Is Amit Nagar safe? Is the question. विजयनगर वीर की मांग है रेडर आउट। हमारा निर्णय है 3 पॉइंट्स रेडर सेफ। कृपया रिव्यू कीजिए। Now, what do you have to say about this review? Vijayanagar Veers are saying raider out by which margin? But by which angle? How can the raider be out where he is not even crossed the lobby? Look at that. The lobby is his balcony, and he's just waving the hand to the fans from his balcony. Look at that. He is in the air and crossing the midline comfortably. Just cannot be out, isn't it? बिल्कुल, क्योंकि वो लॉबी में से हाथ गया था, वो बाहर की तरफ से क्योंकि एंकल से हाथ नहीं आया था, जिसके चलते यहाँ पर बिल्कुल ये खराब रिव्यू यहाँ पर लेता हुआ नजर आया है विजयनगर वीर्स। वैसे ही कहते हैं ना कि वो करीबी में आटा गीला, यानी कि वैसे ही आप पिछड़ रहे हैं और आप अगर इस तरह से रिव्यू लेंगे तो आपके विरुद्ध जाएगा। देखिए विरुद्ध बिल्कुल जाएगा। 3 अंक यहाँ से काजीरंगा को मिल जाएंगे। नवीन, एक और बार विजयनगर वीर्स यहाँ से ऑल आउट की दहलीज पर आ जाएगी। Yeah. Amit Nagar has been called back. Yes. This is what I said. Amit Nagar is safe. Yeah. This is what I said. Amit Nagar will be safe, and Pawan Bhati has to go out. So that is a good decision. It is a super raid for sure, but Amit Nagar did not touch Sagar Malik. So somewhere a small light under the tunnel for Vijayanagar Veers. They had got stuck inside the tunnel, but Amit Nagar is staying there on the mat. He can also raid. Now he has to forget about this tackle. He has to forget about that wrong tackle that put in. But I'm just trying to keep this very entertaining until the last 40th minute for the Vijayanagar Veers. They can make a comeback. It's a big lead. I agree, it's a big lead. Even if from here on in, because there is 15 more minutes, 14 and a half minutes left in this match, they can make a comeback. There are chances. There's a small light under the tunnel, and you will have to go chasing that light. Why? Why, Amit Nagar? Why? इतना आगे से नवीन आपके लिए आज कुछ ही बेहतर नहीं जा रहा है। एक बार फिर से इतना ज्यादा आगे से अमित नागर को अब जहन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, बल्कि राहुल कलीरावना आपके पास नहीं आए थे, आप वहां पर गए थे। तो नवीन, जो आप अक्सर कहते हैं ना कि ट्रेन को आने दीजिए, उन्हें रुकने दीजिए, आप प्लेटफॉर्म पर क्यों कूद रहे हैं? और लीजिए, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कृष्ण मवाई को अंदर बुला सकते थे, बट एक और बार यहाँ से ऑल आउट हो जाएगा विजयनगर वीर्स। तो थोड़ा सा आज मनोबल यहाँ पर डाउन नजर आ रहा है विजयनगर वीर्स का। And see who's putting the ankle hold. Parveen Dhankar. Parveen Dhankar with a big smile says, I can also tackle.
and he is happy. Why? Unbelievable. See, I was just trying to build up that situation for a comeback. Nice block. Sagar Malik goes out. Okay, good job by the defense, especially by the cover defenders. They have to carry on with this. It is 18 ones are 8, 18 twos are 36. Am I correct? Yes, Naveen, you are correct. अब यही करना होगा, अब यही करना होगा। यहाँ से आपको पूरी तरह से अब अतिरिक्त दबाव बनाना होगा काजीरंगा राइनोस पर। गेम के मोमेंटम को अब अपनी पक्ष में यहाँ पर लाना होगा और वो तेजी से करना होगा। विशाल चौधरी बेखौफ होकर रेड करिए। देखिए, अब आपके पास खोने के लिए वैसे बहुत कुछ है, पर अब यहाँ से वैसे ही लीड बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप अपनी बेस्ट स्किल का यूज कीजिए, तेजी दर्शाइए। अगर आप बने रहना चाहते हैं युवा कबड्डी सीरीज में तो बहुत ज्यादा तेजी दिखलाइए। ये 13 मिनट आपके पिछले बहुत सारे दिनों का हो सकता है काम, पर योगेश दैया और आज विजयनगर वीर के रेडर ऐसा लग रहे हैं नवीन जैसे वो ताकत घर छोड़कर आए हैं। Oh, absolutely no power in those legs and hands. Look at that. He caught in midair. He could not go on in to reach the midline, and Ravindra Beniwal comes in for the support. But I'll tell you something, even a better option. Yeah, those fingernails would have been empty. I understand the manager for Vijayanagar Veers is completely tense, no doubt. Because after this match, if they don't come back, they will be eliminated from the Monsoon edition. I am not a person who will run away from any problem. So, if Varun Bhati can probably hear me out, or even if Arjun Sirohi can go in. Yeah, Varun Bhati. So, if he goes in, come on. Okay, right. Against Yogesh Daya, it is a smaller danger than compared to against Rahul Kaliravna. If Varun Bhati is going in, what he has to do is, he has to kick in the right timing. Again, a diving ankle hold by Yogesh Daya keeps the danger on. But Varun Bhati should not shy away from taking the challenge against Rahul Kaliravna. डेफिनेटली नवीन, डेफिनेटली एक बार फिर से बहुत अच्छी तरीके के साथ डाइव लगाया। वो जिसमें बेहतर कर सकते हैं वो काम वो करना चाहेंगे। एंकल होल्ड पर नहीं गए, डाइव लगाते हुए नजर आए और दोनों एंकल्स पर उसके पश्चात गए। अगर आप दोनों एंकल साथ में सही समय पर सही टाइमिंग पर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती है कि रेडर सक्सेसफुल हो पाए। बट नवीन, आज थोड़ी सी क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी में कमी नजर आई है विजयनगर वीर से, क्योंकि जब पिछला मुकाबला भी आपने काजीरंगा के विरुद्ध खेला था तो 18 पॉइंट दोनों कॉर्नर मिलाकर लाए थे। बहुत होते हैं नवीन 18 पॉइंट्स। Yeah, it's too much. It's too much in a kabaddi game of 40 minutes. Yeah. Now Varun Bhati. See, I'll tell you something. Fake a bonus. Don't go try the bonus and don't come away from him. Don't come away from the left corner. Right, this is what happened. This will happen if you come away from him. Jose pulled out and Varun Bhati will get 2 points. It's torn into pieces by Rahul Kaliravna. Oh, that was a vicious tackle. He will be awarded a green card for that. No doubt. He will be awarded a strong green card. Is Rahul Kaliravna. Number 12. Kaziranga Yeah. Rhinos. And luckily for Rahul Kaliravna, it's not an yellow card. But an yellow card will mean 2 minutes outside the game. And that would have been really dangerous for Kaziranga Rhinos. He goes in for the kick on the right flank. Rahul comes across as a block. He wants to put him outside that midline, but no, could not keep him down. Varun Bhati a little more stronger than Rahul Kaliravna. He lost his jersey. He's playing with the same tone jersey. Okay. नीचे एक जर्सी पहन ली है और वो चाहते हैं कि 9 नंबर इनके दिल से जुड़ा हुआ है, अभी जरूर बैक पर है, बट ये 9 नंबर क्या काम कर पाएगा। आप डू और डाई रेड है, मोमेंटम बनाइए विजयनगर वीर्स, कोशिश कीजिए यहाँ से सागर मलिक को शिकार बनाइए। राहुल और सागर अगर साथ में साथ बाहर गए तो मजा आ जाएगा, बट आप ये लगातार गलतियां कर रहे हैं। फिर से अमित नागर शायद लेफ्ट कवर पर गलती करेंगे। कप्तान आज बिल्कुल आपके लिए कप्तानी दिन नहीं रहा है। More importantly, you know what's happening? It's Rahul Kaliravna who is coming back on the mat. Amit Nagar, there was a big window to make a flying comeback as a phoenix bird, as a strong vulture. You guys could have come back, Vijayanagar Veers, but look at that. Rahul Kaliravna right back on the mat, and whatever Varun Bhati did, losing his jersey, is now gone for a waste. Oh, such a big error by Amit Nagar. That is the turning point for me in this match, because if Rahul Kaliravna wouldn't have been there, he would have raided even better is Varun Bhati. See, he goes back empty-handed now. And what he did, I liked what he did. He did not go with his legs. He went with the hands against Rahul Kaliravna. Because you need to fake a bonus. And then when Rahul comes to your ankles, just press him down. Keep your hands on his shoulders or on his cheeks. Get the point.
Do not give your legs completely. Just give it 50%. Just fake a bonus, and then Rahul will definitely come to pounce on you. That is the time that you will have to keep your hands. But all this planning went to a waste because Amit Nagar put in that false advanced tackle. Bye bye Vishal Chaudhary now. Header out. राज विशाल चौधरी किसी भी एसेट किसी भी स्किल को यहाँ पर कारगर साबित नहीं होने दे रहा है। लगातार एक और बार यहाँ से सेम तरीके के साथ यहाँ पर योगेश दहिया अभी अपना शानदार प्रदर्शन आज दर्शा रहे हैं और फिर से दोनों ही कॉर्नर्स। अगर आप राहुल कलीरामना से बच जाते हैं तो योगेश दहिया आप यहाँ पर पाते हैं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई यहाँ पर नजर आ रही है विजयनगर वीर्स के रेडर्स के लिए, और वहीं पर विजयनगर वीर्स के कॉर्नर्स आज इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, कवर्स इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं कर पाया है नवीन। यानी कि क्या अब आप कहेंगे कि लगभग देरी हो चुकी है विजयनगर वीर्स के लिए इस मुकाबले में वापसी के लिए, बट हम फिर भी चाहते हैं विजयनगर आप भूल जाइए जो अतीत में हो चुका है। अगले 8 मिनट दर्शा दीजिए कि आप डिजर्व करते हैं यहां से आगे जाना। Yeah, the 11 points by the corners today. The total 11 points for Rahul Kaliramna and Yogesh Daya today against the Vijayanagar Veers. Do or die rate. The defense of the Vijayanagar Veers, especially there in that left corner, should understand that. Let him go. No, right corner says, I will make the error. Don't worry if the left corner lets him go. Ravi Bhati says, I will give away a easy point. Now, what else can Yogesh Nagar do? What else can he do with this defense? और नवीन देखिए आज वो विजयनगर वीर्स नजर आई नहीं है जो हमने एलिमिनेटर नंबर 1 में देखा था, वो जो उनमें बेखौफ अंदाज में प्रदर्शन करने की और वो लड़ने की जो क्षमता थी, आज वो फाइट नहीं दे पाई है। यहाँ पर डू और डाई मैच में कहते हैं ना, आप डू और डाई मैच में कि इट्स टाइम टू राइज, इट्स टाइम टू फाइट, बट वो फाइट यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग नजर आई है। और आज थोड़ा सा मेरे लिए सोचने लायक रहा है कि अर्जुन सिरोही से बहुत कम रेट्स कराई है। मेन वहाँ पर वरुण भाटिया और विशाल चौधरी को यहाँ पर अस्त्र के तौर पर यूज किया है, बट वो दोनों अस्त्र आज यहाँ पर ब्रह्मास्त्र नहीं बन पाए हैं। Yeah, strategic timeout. Let's listen to only Sunil Yadav. Let's listen to only Sunil Yadav because let's see what he wants to say, because Yogesh Nagar Saab will be really feeling disappointed with the performance. No point in listening to him. Yeah, this is a nice shot. वैसे नहीं लेनी, ठीक है ना? हाँ, आराम से, जल्दबाजी ना। एक दो मान ले ट्राई ले लिए बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है ना? घना ही ऊपर डालिए यार के नाम। हाँ हाँ 5-6 हाँ कर देंगे चेंज, ठीक है ना? पहली पोली ने कर दी फिर। Now they are just practicing to play the match against Muthal Magnets, but I'm not in favor of Vijayanagar Veers throwing the towel yet. Do not throw that towel. और किसी को Yeah. थोड़ा सा रुक के, कोई बात नहीं, हार जाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? मारो अपने डिसाइड भाई रे, सेफ नहीं आना अर्जुन, मार दे, लीड हो रही है कोई, तुम मारो भाई, पूरी डिसाइड मार ले। So sorry Yogesh Nagar Saab, I'm so sorry with your plight that you had to say that line. What else? That's what I asked. What else can a coach do? बिल्कुल, और इससे ज्यादा यहाँ पर फेवर क्या कोई कोच दे सकता है? उन्होंने कहा कि चलिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हारेंगे ही तो ना, पर आप अपना बेस्ट दीजिए, आप जाइए और हर रेड में प्रयास कीजिए, क्योंकि अब रेडर्स यहाँ से अब आपको मुकाबले में थोड़ा थोड़ा वापस लेकर आ सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा देरी यहाँ पर हो चुकी है और काजीरंगा राइनोस जानती है कि मोमेंटम को सिर्फ स्लो डाउन करके रखना है, पूरी तरह से उनके पक्ष में है। और सुनील यादव साहब बहुत ही जल्द शायद कोई सब्स्टिट्यूट करते हुए भी नजर आए। Yeah, you know what? If I had the powers or the energy of appointing Yogesh Nagar Saab as my dean of a college, I would have done it. I really would have done it. Arjun Sirohi will get a solitary point for himself, no problem. But for the sweetness of Yogesh Nagar, I would have really named him even the VC sometimes, vice chancellor types. और नवीन स्वीट होने के साथ साथ वो इफेक्टिव वर्ड्स बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो दिल को बात लगती है बिल्कुल वो बात वो करना पसंद करते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा कि रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, जिस तरह से हम महेंद्र सिंह धोनी की अक्सर बात किया करते हैं। अभी भी यहाँ से 6.25 मिनट का समय शेष है, पर बहुत एक बड़ी लीड है और उस लीड को फर्स्ट हाफ की समाप्ति की तरफ यहाँ पर सिर्फ 8 पॉइंट की लीड थी नवीन, बट सेकेंड हाफ तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं गया है विजयनगर वीर्स के। I'll tell you what, there is a saying in Bombay language, Bombaya language, whatever you see, अगर लोकल पे तू अटकेगा नहीं तो चढ़ेगा नहीं, means the local train is the lifeline of Bombay, of Mumbai. If you don't cling on to the local train, you will never make it to your destination. That's what happened with Vijayanagar Veers in the entire Yuva Kabaddi series Monsoon edition. They were clinging on to their train,
from a long time, and now they're just going outside the train. They are not clinging on as well because Kaziranga Rhinos have dashed them outside on that clinging position. Look at that body language. It's not looking nice. Shoulders drooping, eyes dropping, as a lot of substitutions has happened in. Gaurav Daya comes in for a do-or-die raid. और इस बार जरूर एक हाथ से यहाँ पर कहा, एक हाथ से ही यहाँ पर इस बार टैकल किया, यानी कि जानते थे गौरव दैया आए हैं नई खिलाड़ी, और रवि भाटी ने कहा कि चलिए दो हाथ नहीं, इस बार मेरा एक हाथ बहुत है। बट जहां पर आपको दो हाथ की आवश्यकता थी रवि भाटी, आपने वो प्रदर्शन नहीं कर दिखलाया है आज अपनी टीम के लिए। ये अंक जरूर है। क्या अभी भी नवीन कुछ हो सकता है? क्या इस ऑल आउट को पहले आपको जल्दी करना होगा और कुछ मल्टीपल सुपर रेड्स यहां से चाहिए होगी? क्या 4.5 मिनट में नवीन? वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम क्या देख सकते हैं, अर्जुन सिरोही यहाँ पर क्या अंक लाएंगे? जी नहीं, मोहित कह रहे हैं आज डिफेंडर्स का दिन है, और एक और सुपर टैकल लीजिए। सुपर टैकल 2 पॉइंट। He had the opportunity to turn himself, but instead of the outward turn, what he actually put in was, look at that. Instead of that outward turn, he should have just made sure he just goes through with the lobby. And instead of Pawan Bhati trying to stop him, it was Rahul Kaliravna once again there as a second line of defense. See, I understand. Oh my God. Okay. Let me not even make my comments on this. 3 and 16 See, out. I understand the two corners of Kaziranga Rhinos have been really destructive with 11 points. Where was the opportunity for Vijayanagar Veers? Let me go back to that story where Varun Bhati did it fabulously well against Rahul Kaliravna, and Arjun Chirohi on a couple of occasions got Yogesh Daya out. 11 So when you are taking off the charge, when you are taking off the danger from the opposite side, it depends on the other team members of the team also to think on the same lines. You should not be thinking about your game. Think about the team's game and see that, okay, now both the corners are outside, and now let me see if we can even more go ahead and defleet the other defense. See, there are, I think, 4 or 5 occasions. There are 4 or 5 occasions where both Yogesh Daya and Rahul Kaliravna were not on the mat. At least 4 occasions, if I'm not wrong. And the whole team did not think about it. बिल्कुल नवीन, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बतौर टीम के यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए आपको गेम को खेलना होता है। पर यहाँ पर आज विजयनगर वीर्स उस तरह को बेहतर नहीं दर्शा पाई है और लगातार यहाँ पर लैग करता हुआ नजर आया है उनका खेमा। और सागर मलिक भी आज स्टार रहे हैं अपनी टीम के लिए। पहले हाफ में जो शुरुआती मिनटों में जो बढ़त रही थी ना नवीन, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाया है सागर मलिक ने और उनके डिफेंस ने। ये 3 खिलाड़ियों की आज इर्द गिर्द घूमी है कहानी, योगेश दहिया, राहुल कलीरावना और सागर मलिक के चक्कर में अपना आराम से खेलिए हम कुछ, ठीक है ना। 0 पाव है तो मारनी नहीं तो चोट ना खा लियो भाई, आराम, ठीक है ना। हाँ, बार-बार ट्राई। I expected this because you do not have to have any injuries playing against the Mursal Magnets. हैं? हल्लू जाएगा, एंकल पकड़ाएगा, बेटे मार ले थोड़ा सा, जीत आई से थोड़ा सा इधर रोक लो, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, कोई बात ना, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Oh, Dean Saab, you are appointed in my university. I want to be a student under you. Unbelievable. Right, so see 3 instances. One, in that first half, last raid, Arjun Chirohi should have thought about it, saying that is the last raid, and after the toss, after the second half, it would have been Vijayanagar Veers getting their first raid chance. They could have had a better chance there, as once again Varun Bhati gets a solitary point. That is option number 1 they missed out on. Okay. Option number 2, Sagar Malik was tackled, I think 4 times, if I'm not wrong, 4 to 5 times. Sagar Malik has been pinned down. 3 minutes. They did not take that advantage because it's only Sagar Malik who's doing the raiding. Amit Deshwal is just coming now, and of course Parveen Dhankar never been there. And see, easily given away to Amit Deshwal as well the point. So this is error number 2. And error number 3, the most important one, when you know that the 2 corners are outside the court, they are on the bench, you should have gone in for the kill. You should have gone in for the kill. That is why it's a 20-point lead for the Rhinos.
एग्जैक्टली नवीन, पूर्णतः सहमत हूं मैं आपकी उन तीनों ही यहाँ पर रीजन से, जहां पर और वो एरर से जो लगातार करता हुआ नजर आया है यहाँ से विजयनगर वीर्स। और अगर हम उन तीन बातों की बात करें जो काजीरंगा राइनोज ने आज बहुत अच्छे से किया है, सबसे बड़ी बात कि विजयनगर वीर्स एक मोमेंटम वाली टीम है और काजीरंगा राइनोज ने यहाँ पर एक बार फिर से एक अच्छा डैश किया है विशाल चौधरी को। और उस टीम ने क्या किया है, काजीरंगा ने शुरुआत से ही विजयनगर वीर्स पर दबाव बनाया है, ये सबसे बड़ी बात काजीरंगा के जो पक्ष में गया है। सागर मलिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और राहुल कली रावना बिल्कुल भी बेचैन नहीं हुए हैं पॉइंट्स के लिए। जब जोन में आए हैं, जब ही उन्होंने अंकों के लिए गए हैं। अब देखिए एक और बार आज बिल्कुल यहाँ पर विजयनगर वीर्स लग रहा है कि आज उनकी एनर्जी को वो अपने होटल के रूम में ही छोड़ते हुए नजर आए। आज डिफेंस उनका वो एनर्जी के साथ नहीं लग रहा है, उनके आज रेडर्स में वो अलग तेजी नजर नहीं आ रही है नवीन। Along with leaving something called a big thing like energy, they have also, thrown in the towel very early. See the body language itself. See, Kabaddi is a contact sport. How you appear is what you show to your opposition. It is like you can be really scared inside your heart. Your stomach can be making all sorts of noises. You have been getting into that anxiety mode more often than not. Oh, Rahul, spare him. Pawan Bhati that time. Guys, spare the Raiders. बिल्कुल मोहित वहां पर मौजूद है और राहुल के पश्चात यहाँ पर बता रहे हैं कि वो पोजीशन बहुत खास है, चाहे राहुल खेले या फिर मोहित खेले, ये पूरी तरह से तैयार है। और वरुण भाटी वहां पर एक बार फिर से बचना चाहते थे, बट उसके बाद कहा मोहित ने, भाई क्यों जद्दोजहद कर रहे हो, ये लो फिर मेरा अग्रेशन, ये लो हम मुकाबला जीत रहे हैं। और अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशंस नजर आएंगे बहुत सारे। Is that a message to Sunil Yadav? If Rahul Kairavana is not doing well, I am there, Mohit Pangal on the left corner. I can also do the angle holds, but come on. Rahul is Ravana in that corner. Oh, come on, Ravana also is R. So can we call him? क्या बात है? Can we call him Ravana? Rahul Ravana. Forget the Kali there. Rahul Ravana is a nice name because Rahul Kali Ravana. Okay, the raid is completed. Thank you so much. 10 seconds to take his name. Where do I tell my story? So Rahul Ravana is a nice name now. Okay, so ruthless Rahul or Rahul Ravana, whatever we can go with. But just coming back to that story where the corners, even if they are so effective, just imagine what will be going through the minds of Murthal Magnets now. Because in the next eliminator round, it's going to be Murthal Magnets versus Kaziranga Rhinos. Unbelievable, this is going to be that match. Because Murthal already struggling with no raiders. Akash Deshwil, the left raider, comes in. And along with Mandeep, the right raider. Mandeep always good in his toe touches. And against the Ravana, what's going to happen? You can't even imagine that match, can you? बिल्कुल बहुत ही कड़क मुकाबला होगा इस बार। फिर से रोबिन कुमार ने प्रयास किया था कि चलिए कुछ अंक अर्जित किए जाएं। एक बार फिर से काजीरंगा के डिफेंस उन्हें धरेगा, दबोचेगा। और एक और यहाँ पर टैकल पॉइंट योगेश दहिया के लिए एक अच्छी तरह से एंकल पर वहां पर अमित देशवाल टूटते हुए पड़े और अमित देशवाल भी अब लगातार शिकार बना रहे हैं। पर नवीन आपने बिल्कुल सही कहा है, वो मुकाबला बेहद जबरदस्त होगा। और बता दें कि पिछली बार जब मनदीप खेल रहे थे ना राहुल और योगेश के विरुद्ध, तब राहुल और योगेश लगातार उन दोनों को शिकार बनाया है मनदीप ने, क्योंकि उनकी एक तकनीक काम आई थी कि कॉर्नर के आपको ज्यादा पास नहीं जाना है। इस व्हाइट लाइन के आसपास खेले थे, बॉक लाइन के आसपास, और राहुल उस मैच में बेचैन हो गए थे पॉइंट्स के लिए। बट अब किसकी बेचैनी अगले मुकाबले में आएगी ये तो हम अगले मुकाबले में जानेंगे। बट यहाँ पर विजयनगर वीर्स को बिल्कुल बेचैन कर दिया है और अब शुभम को भी कर देंगे नवीन। एक आसान सा टैकल अंकुश के लिए। Shubham Biduri is just a small feather in that big wings, isn't it? When the big wings did not fire, Ankush Dun also says, okay, where am I on the tackle points? Let me get something out. Under a minute now, as we keep, on that post-mortem lines of Vijayanagar Veers. See, let me conclude the talks on Vijayanagar Veers for the entire monsoon edition. They have played well. They have played well in patches. They have shown few brilliant moves and techniques. But on a whole, they have clinged on to that last position more often than not. And comparatively for the summer edition, the monsoon edition has been better because of that coach, Yogesh Nagar, because of his really cool and calm nature. Sometimes I feel he's too sweet. He is, very, very sweet, which somewhere gets back at him. You cannot be too sweet as well. And I'm not saying be like Ramesh Narwal Saab. Oh, he is too hot and spicy. He is very, very strong as a coach. Kaziranga Rhinos win this eliminator number 2 and they go through
to the another eliminator that will be played against the Murthal Magnets, and it'll be really nice to see what will happen there, because the winner of that match will be playing against the Arawali Arrows. So it's all there for the taking. One step at a time, one step closer for the Kaziranga Rhinos to go to meet Hampi Heroes in the finals of the Yuva Kabaddi Series Monsoon edition in the finale on 19th, couple of days ago from here. As Harshit, I will probably relieve you from the commentary box to go down to speak to Sunil Yadav. And also, if possible, get last words from Yogesh Nagar Saab as well. Because after this, we will not probably see him. Just ask him what is the positive points that we can, rather he can take away from the entire season. बिल्कुल नवीन, यहाँ पर कोशिश करेंगे योगेश नागर साहब से भी उनके शब्दों को जान पाए। उससे पहले अगर हम बात कर लें तो विजयनगर वीज यहाँ पर जरूर अपना सफर समाप्त करेगा, बट कहना चाहेंगे राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए नजरिया मजबूत हो मेरा। समर एडिशन से मॉनसून एडिशन में यहाँ पर नजरिया मजबूत कर आया है विजयनगर वीज, बट अब और अगले सीजन में बेहतर करना चाहेगा। बट आज काजीरंगा की जीत ने बेहतर प्रदर्शन को दर्शाया और जीत यहाँ पर प्राप्त करेंगे। नवीन, आपकी तरफ अब यहाँ पर कार्यभार छोड़ते हैं। Yeah, thank you Harshit, but please make sure we get Yogesh Nagar Saab second, at least after talking to Sunil Yadav. That'd be really nice to hear it from him, because a lot of positives for Vijayanagar Veeds, no problem. Yeah, in this match they have been out and dusted away by the Kaziranga Rhinos' defense. 20 points, look at that, and just 18 for the Raiders. That shows the difference between the two teams, and of course the defense not doing really well. We will be really feeling to see that the Kaziranga Rhinos, just with Sagar Malik, they completely got the match under their control. And yes, of course, Amit Deshwal came in the last dying moments of the match, got a super raid for himself. But I will say Kaziranga Rhinos have won this with just one raider. It is just Sagar Malik doing the talking. And Vijayanagar Veeds will have to end their journey in a very, very disappointing note. But it is all set now against the strong defense of the Kaziranga Rhinos, against the raiding unit of the Murthal Magnets, who are probably struggling in the summit round. They haven't won a game yet in the summit round. Remember, they lost their last match of the summit round, and they've lost 2 matches in the summit round. So, Murthal Magnets weak in confidence. Let's see what that will be turning around if the Kaziranga Rhinos can do a lot of damage to the Magnets. But about this match, 14 raid points out of 20 raids. So he's put in a lot of raids. That shows 20 raids from a raider is just dependency on one shoulder, over dependency, I should say. And the best defender, come on, it has to be this guy, Rahul Ravana. Only 7 attempts and he's got 6 out of it. The only attempt that did not go in his favor, I think, is the block on Varun Bhati, where he tore away the jersey of him and he got a green card. He came, keep him down inside the midline, and Varun Bhati, just with his power, lost his jersey and got those 2 points. That was a big window for a comeback. Never to be. Rahul Kaliravana, I will call him in the defenders that he is a ankle hacker. You get your ankle into him, he will hack you down and he will hunt you down. And yeah, as we speak about Rahul Ravana, is a nice name for his presence on that left corner. Right, let's go down now to Harshit as a very, very happy moment. We will be parting ways with Yogesh Nagar Saab. So let's talk to Yogesh Nagar first, of the Vijayanagar's coach. Over to you, Harshit. और चलिए, योगेश नागर साहब आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अनफॉर्चुनेटली आप हारे जरूर इस मुकाबले को, बट बहुत अच्छा खेली है आपकी टीम। इस मुकाबले में जरूर थोड़े से कंधे यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए हैं, बट क्या कहना चाहेंगे सर, इस मुकाबले में कहाँ थोड़ी सी गलती ज़्यादा हुई? देखिए सर, काजीरंगा एक अच्छी टीम है और हम आज बहुत ही गलत खेले हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी है, लड़के ठीक खेले थे, कहीं ना कहीं कमी थी मेरे अंदर जो हम नहीं जीत पाए हैं। मैं सारा श्रेय अपने ऊपर लेता हूँ, मेरी वजह से टीम हारी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं सर, हम बहुत कुछ इधर से सीख के जा रहे हैं। जो हमारी कमी है, हमने सालों की मेहनत है, ऐसे टूर्नामेंट सालों में आते हैं और हमारा होली, दिवाली, दशहरा सभी ये टूर्नामेंट होते हैं। खिलाड़ी का कोई और तो टूर्नामेंट ही सब कुछ त्यौहार होता है, और ये होली दिवाली तो सालों में आते हैं, ऐसे ही हमारे सालों के त्यौहार ये हैं। और सर, मेरे खिलाड़ी भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और मैं भी बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। अगर हमें आगे को मौका मिलेगा कभी भी युवा सीरीज़ में, तो हम पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है
आने वाले समय में अगर हम युवा कबड्डी सीरीज में आए तो हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अब भी मेरी टीम ने बहुत फाइट किया है। पहले ही राउंड से हम बिल्कुल जूझते आ रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि विजयनगर इतना लंबा सफ़र करेगी और हमने सफ़र पूरा किया। कोई दिक्कत नहीं, आज हम लूज हुए हैं। अगर नेक्स्ट मौका मिला तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। चलिए सर, और क्या कहेंगे जिस तरह से युवा कबड्डी सीरीज की आपने बात की, युवा कबड्डी सीरीज के पूरे सफर के बारे में, आपकी जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमने बहुत इन्जॉय किया है। जिस दिन भी रेस्ट रहा है हमने पूरा इन्जॉय, मूवी वगैरह देखी है, बाहर खाना खाया, पूरा इन्जॉय किया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी इस युवा सीरीज से ही मेरे 4 लड़के जो नेशनल का कैंप है वो अटेंड करेंगे। जो हमारे महासचिव हैं श्री राजेश जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कल कहा था कि जो तेरे 4 लड़के हैं इसमें जो जैसे कृष्ण हो गया, पवन भाटी हो गया, कुणाल हो गया, रवि भाटी हो गया, ये चारों लड़के सीधे के सीधे, क्योंकि यूपी में बहुत टफ होता है, कैंप तक जाना भी बहुत टफ होता है। हमारे यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर जोन होते हैं, फिर स्टेट होते हैं, फिर मंडल होते हैं, मंडल का स्टेट होता है। बहुत टफ है उत्तर प्रदेश में जाना। लेकिन इन 4 लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। युवा सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला सभी खिलाड़ियों का, सजा सजाया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ करके दिखाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे हम करके दिखाएंगे। जो हम समय मिलेगा इस समय में हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे और अगली बार हम बहुत कुछ करेंगे सर। चलिए, थैंक यू सो मच योगेश नागर साहब, आपके साथ सफर बहुत ही बेहतरीन रहा। और चलिए हम आगे की तरफ चले उससे पहले एक बार फिर से सीधा ले चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स में। नवीन आपके साथ हैं। Emotional and golden words. If you have to mix both together, that is Yogesh Nagar Saab's words. Because I love the way where he said he took the entire responsibility on him. He did not blame the team as well, as we've seen big sporting giants do, that he didn't do well, he didn't do well. He did not name anybody. He took the whole responsibility on his shoulders. He said, I did not fire, and that is why, we did not do well. But what I really like is the way he expressed his happiness on Yuva Kabaddi series as a platform. It is tough. It is very tough coming from a state like UP where there is so much of talent on Kabaddi, and Yuva Kabaddi series is not just the platform for some franchisees to get into the players. It is the national camp that you should be targeting. It is playing for the country that you should be targeting, and that is what I am also proud about Yuva Kabaddi series being a very small part on the microphone as well. Wow, thank you Yogesh Nagar Saab. We'll be missing you a lot as well. And now let's go down to Sunil Yadav, the Kaziranga coach, is with Harshit. बहुत बहुत बधाई हो सुनील यादव साहब, क्या बात है, चारों खाने चित किया है आज आपने विजयनगर वीर्स को। बहुत अच्छा खेली है सर आपकी टीम, खासकर डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंडर्स जो हैं आपके सबसे बड़ी मजबूती है, और उन डिफेंडर्स ने आज फिर से बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखलाया है। बिल्कुल सही सर, मैंने आपको पहले भी बताया था योगेश और राहुल की जोड़ी चलेगी तो हम ट्रॉफी पक्का उठाएंगे सर। ये दोनों अगर हमारी टीम की मेन कड़ी है, ये दोनों अगर बढ़िया खेले तो हम ट्रॉफी पक्का उठाएंगे। बाकी पूरी टीम का सपोर्ट रहा, आज एकजुट खेली है मेरी पूरी टीम। और रेडिंग डिपार्टमेंट में भी सागर ने कल की तरह आज बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया है सर। बिल्कुल सर, सागर मलिक ने कहीं भी यहाँ पर अंकित राणा को मिस नहीं होने दिया। तो क्या अभी भी आप सागर मलिक के साथ लगातार खेलेंगे, या फिर अंकित राणा कभी भी क्या वापसी कर सकते हैं? सर वो क्या नाम है, अंकित का तो अभी पक्का कंफर्म नहीं है। बाकी सागर ने कहा कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, और जो रेडर्स है, अमित है, सचिन है, परवीन है, उन्होंने कहा कि हम रेडिंग डिपार्टमेंट की कमी पूरी करेंगे और टीम को रेड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डिफेंस में अच्छा करवाइए। तो बाकी डिफेंस की हमारे राहुल, रविंदर, योगेश, बाकी अंकुश, दीप, सारे वो भी एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस में हम आपको पक्का 100% देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आने वाले मुकाबलों के लिए बहुत सारा विशिंग यू वेरी गुड लक। और सीधा ले चलते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में होंगे नवीन। Thank you, Harshit. It is very clear. Kaziranga Rhinos' defense versus Muthal Magnets' raiding. That is what it's going to be. And today's games were a really mouth-watering contest. Also emotional, where we will be parting ways with Vijayanagar Veers only for this monsoon edition. And of course, there is lots more to come in the future series, in the future editions in the Yuva Kabaddi series that's going to be happening. So see you soon there, Vijayanagar Veers. And there we go. Eliminator number 3, Muthal Magnets versus Kaziranga Rhinos. That is what we'll be targeting at. And Arawali Arrows will be waiting for the winners of the Eliminator number 3. Is it going to be Muthal Magnets, who haven't won a single game from the last match of the booster round?
to the last match of the challenger round, and then in the summit round they haven't won a game at all. So Murthal Magnets low in confidence, facing up against a very, very confident, defense strong Kaziranga Rhinos. So tomorrow it's going to be really nice in the 9 a.m. game. So we will see you soon in that live match for tomorrow. But stay tuned for the post-match presentation of Kaziranga Rhinos and Vijayanagar Veers. And tomorrow also we will have another match in the evening where the eliminator number 3's winner will be playing against the Arawali Arrows. So two proper games coming up tomorrow, and then the all-important finale that is going to be happening day after. So it's a fabulous day, couple of days for Kabaddi. I am Navin Shourie signing off along with Harshit Sharma here, and do come back soon for this presentation and also tomorrow for the all-important eliminator matches. Kaziranga Rhinos outplayed Vijayanagar Veer in all the departments. Welcome to the post-match presentation of Eliminator number 2. Firstly, we would like to thank our partners Dream 11 broadcast partner Fencode, physio partner UEM Voice of Kabaddi Radio City 91.9 FM, our healthcare partner Curest Hospital, और आज हमारे साथ presentation में जुड़ रहे हैं the very senior Mr. मदन मोहन पांडे सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड। सर, हम तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहेंगे और आज आपके सानिध्य में होगी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ पर इस दोनों टीमों के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर काजीरंगा राइनोज वर्सेस विजयनगर वीर्स। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेला, बट काजीरंगा राइनोज ने एक बार फिर से दर्शा दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ टीम की तरफ बढ़ रही है। 58-27 की एक बड़ी लीड से हराया विजयनगर वीर्स को। और अब समय है यहाँ पर अवार्ड सेक्शन का। अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे विद बेस्ट रीडर, और बेस्ट रीडर रहे हैं काजीरंगा राइनोज के नॉन अदर देन सागर मलिक, जिन्होंने आज अपनी टीम के लिए 14 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और आपको दिखलाते हैं किस अंदाज में प्राप्त किए हैं। और अब समय है यहां पर बेस्ट डिफेंडर का। तो एक बार फिर से उन्होंने दर्शाया है कि एक खराब मुकाबला उनकी कहानी नहीं बदल सकता है। शानदार वापसी की है, बेमिसाल इस मुकाबले में खेले हैं। वो हैं रूथलेस राहुल कली रावना फ्रॉम काजीरंगा राइनोज, जिन्होंने आज 6 पॉइंट प्राप्त किए हैं। आइए उनके श्रद्धेय टैकल्स दिखाते हैं आपको। और जितना बेहतर खेले हैं राहुल कली रावना, उतने ही बेहतरीन रहे हैं योगेश दहिया। अब समय है कबड्डी कमाल अवार्ड की। तो योगेश दहिया को जाएगा ये अवार्ड, बट उनके डिफेंसिव नेचर की वजह से नहीं। इस बार उन्होंने शानदार परसूट लगाया था और महत्वपूर्ण समय में अपनी टीम के लिए 2 अंक प्राप्त किया था। आइए देखते हैं किस अंदाज में उन्हें कबड्डी का कमाल अवार्ड जाएगा। और आज भी हमारे ऑफिशियल्स बड़े ही सटीक रहे हैं बड़ी क्रूशियल सिचुएशंस में। अब समय है बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल का। आज का ये अवार्ड जाता हुआ नजर आएगा मिस्टर मनीष कुमार राठी सर को। तो
चलिए ये था एलिमिनेटर नंबर 2 पर आप भी अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि 2 और बढ़िया एलिमिनेटर अभी भी आने शेष है जहां पर आप देखेंगे डे 3 ऑफ समिट राउंड। बट अभी हम यहां पर आपसे विदा लेना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमिनेटर नंबर 2।